Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening, depending upon the time at which you are watching this video and also at your GPS location. Namaskaram, Vande Mataram. My name is Manish Verma, and I would like to share a brief overview of my educational background and a professional journey in the pharmaceutical industry. Um, I got a privilege being worked with some of the top Indian multinational house such as Dr. Reddy's Lab, Sun Pharma, MQ Pharma, Tirupati Group, and presently I am working as a freelancer. This is my 24th year in a pharma sector, and over the course of this enriching journey I have had the privilege to work across the various domains, including the sales and marketing, sales training, and academics. Each role has contributed significantly to my learning and growth, shaping my perspective and deepening my understanding of the industry. As I said, currently I am working as a freelancer and providing a comprehensive services to the pharmaceutical industry, particularly in the areas of a sales training and academics. This is my first educational video on YouTube. So let me also share you my perspective, or what inspired or influenced me, or what brought me on the YouTube. See, my core objective in creating the educational video is to support the capability building and help the organization achieve their business goals through the structured learning and development initiative. And this learning would also be useful for the school going and the college going student, especially for the student of 10 plus 2, or the student of a college level in life sciences as well as in a pharma pharma education. Okay, the subject which I am going to cover with you is a very interesting subject. Today we'll going to talk about the titration or the titrametric analysis. जैसे ही मैं इस वर्ड का नाम लेता हूँ तो कई लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कान आती है। कई स्टूडेंट के फेस के ऊपर कुछ चिंता की लकीरें भी उभर आती हैं, क्योंकि टाइट्रेशन और टाइट्रेमेटिक एनालिसिस जो है एक क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, जहाँ पर हर स्टेप के ऊपर आपकी क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, एंड इवन द रिजल्ट इज आल्सो काउंट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी। तो कई बार हमको कैलकुलेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। वी गॉट स्ट्रक टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। सो ये सब बहुत सारा वहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो मैंने सोचा कि एक एजुकेशन वीडियो बनाना चाहिए जो कि स्टूडेंट को, जो 10+2 गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है फर्स्ट और द सेकेंड ईयर, उनको ये काफ़ी हेल्प हेल्प करेगा to understand the basic concept around the titration or the titrametric analysis. In this particular video, we'll also talk about a type of a reaction in a titration, which is extremely important because किसी भी टाइट्रेशन के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि वहाँ पर रिएक्शन का नेचर क्या है, वो डिसाइड करता है कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। We'll also discuss about the role of a equivalent weight, which is extremely important. This is a critical successive factor in any titration. As per my experience and the conviction, most of the time we are getting the error in titrametric analysis because of a wrong calculation involved, because it getting a little the confused that how to differentiate between the equivalent weight or the molecular weight, or how to calculate the the equivalent weight of a different type of a substance. So don't surprise if I say that the equivalent weight is a gateway of a titration, or the equivalent weight is a gateway to understand the normality. तो आप बिना equivalent weight के normality को पढ़ना बड़ा मुश्किल है. So हम लोग will spend the sufficient time to understand the basic concept around the equivalent weight and also the normality, how to define the normality, or what is a mathematical expression, what do you mean by the molarity, again a mathematical expression or the mathematical equation to calculate the molarity. And we'll also develop a correlation between the molarity and the molarity, which is extremely important. जब आप टाइट्रेशन या इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 को मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो। समटाइम दे से दैट 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप
नॉर्मल सोल्यूशन में कन्वर्ट करो. सो दिस इंटर कन्वर्जन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड द मोलैरिटी इज एक्सट्रीमली important, right? So this is the the core agenda of our today's presentation, and I assured you that at the end of a presentation this will help you to restore a big smile on your face, especially उन students के लिए जो titration से थोड़ा सा उनको थोड़ा सा उनको डर लगता है, या उनको ये समझ में नहीं आता है. तो ये एक फाउंडेशन वीडियो है जो आपको ये बताएगा कि टाइट्रेशन क्या होते हैं, कैसे टाइट्रेशन परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. सो आई एम गोइंग टू शेयर अ सीरीज ऑफ माय प्रेजेंटेशन. तो ये पहला प्रेजेंटेशन है जो केवल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टाइट्रेशन के अराउंड जो है प्रोवाइड करवा पा रहा है, लेकिन मेरे आने वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा एक टाइट्रेशन की, जिसमें एवरी वीक आई एम गोइंग टू शेयर यू द वन कंप्लीट टाइट्रेशन. तो दिस विल गिव यू अ कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग around the different type of a titration that you perform at the level of 10 plus 2, or at the level of your first year or the second year in life sciences, or in a B Farm or the B Farm, the first year or the second year. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके अंदर कि टाइट्रेशन क्या है, या फिर टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस किसे कहते हैं. एज आई सेड कि कई बार तो क्योंकि ये एक जो वो सब्जेक्ट है कि लार्जली टॉट सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल एज वेल एज एट द कॉलेज लेवल. ओके, तो कई बार तो हमें ये बड़ा परेशान करता है सब्जेक्ट. कई बार ये सब्जेक्ट जो है बड़ा आसान लगता है. आसान उन लोगों को लगता है सब्जेक्ट की जहाँ पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जहाँ पर उसको कैलकुलेशन हर एक स्टेप की बड़ी क्लियर है, और उसको मालूम है इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होता है. सो फॉर सच टाइप ऑफ द स्टूडेंट इज रिलेटिवली इजी टास्क. ओके, बट टाइट्रेशन थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट तब लग सकता है जब हम लोग जस्ट एंटर करते हैं अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर, और जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को करना परफॉर्म करते हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में तो बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और इस कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल का आना बहुत ज़रूरी है, राइट? So that's why I said that titration or the titrametric analysis is also called as a quantitative analysis. Why it is called as a quantitative analysis? Because the quantity is involved right start from a beginning of a experiment till the end of a experiment. Each and everything is correlated with the quantity. आपने शुरू में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू करते हो तो आप वेइंग से करना शुरू करते हो. जब रीडिंग लेते हो वो भी क्वांटिटेटिव टर्म में लेते हो, और जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हो तो वो भी आप क्वांटिटेटिव टर्म में करते हो. सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो एज पर द डेफिनेशन विच इज मेंशन्ड इन द गूगल टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, titration of the titrametric analysis is a volumetric analysis, or it's a quantitative chemical analysis where our objective is to determine the unknown concentration of a solution by allowing it to react with a solution of known concentration. तो टाइट्रेशन बेसिकली एक रिएक्शन है जहां पर आपके पास दो सॉल्यूशन होते हैं. एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है, और अदरवाइज वी कैन से दैट जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम करनी है. अनदर वन यू हैव solution of a known concentration which is also called as a standard solution, right? And your objective is to determine the concentration, unknown concentration of a solution by allowing it to react with a known concentration of a solution. So this type of analysis is called as a titration or the titrametric analysis, right? So here the two things are extremely important कि हम किसको titrant बोलेंगे और किसको titrant बोलेंगे, right? ये बहुत important है. अगर आप इसके pronunciation में देखें, so there is a very small difference in the pronunciation. It's a kind of a tongue twisting word. One is a titrant and another one is a titrand. Okay, तो आपको थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज इज क्रिएट अ इल्यूजन इन द माइंड ऑफ अदर वेदर यू आर सेइंग अ titrant or the titrant. So it's very easy to define and to differentiate between these two terminology. See, as I said, titration एक रिएक्शन है जहां पर आपके पास दो सॉल्यूशन होते हैं, राइट? यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ अ टू रिएक्टेंट. एक सॉल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है, या फिर जिसकी कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है. अनदर वन, a solution of a reactant whose concentration is known to you and which is called as a standard solution. Okay, so here
a solution of a known concentration is known as a titrant, and during the course of your titration, we take it in a burette. Then the another one, a substance whose concentration is being determined, वो concentration solution, वो concentration जो आपको determine करनी है. So the solution, the unknown concentration of a solution which is to be determined is called as a titrant or called as a analyte, and during the process of the titration you take it in a कोनिकल फ्लास्क. तो जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं तो आपके टीचर आपको एक सैंपल देते हैं. उस सैंपल के अंदर आपको एक सॉल्यूशन दिया जाता है वेयर द कंसंट्रेशन इज नॉट नोन टू यू, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द unknown concentration of a solution. So what do you do over there? You take out the measured volume of that sample into a conical flask by the help of a pipette, add a few drops of an indicator, and start adding the standard solution from a burette into a conical flask until the end point is achieved. So this type of a reaction is called as a titration, right? And वहाँ पर हमको ये कैसे मालूम पड़ता है कि what is the end point of the end point of a titration? This we determine by the help of an indicator. So indicator basically is a type of a chemical. We add it in a conical flask, and at the end of a reaction it shows the visual change in a color. तो जैसे ही वहाँ पर रिएक्शन का एंड होगा आपके सॉल्यूशन का कलर वहाँ पर चेंज हो जाएगा. That marks the end of your titration, and that we determine by the help of an indicator. And the last one is your equivalence point or the end point. As I said, the equivalence point or the end point is the end of a reaction. This is the end of a titration, and the end of a titration is judged by the help of an indicator, where at the end of a reaction it shows the visual change in the color of a solution. So that's called as a titration or the titrimetric analysis. So once again, for the benefit of the group, what is titration? Titration एक reaction है. उस reaction के अंदर आपको determine करनी है unknown concentration of solution. और वो unknown concentration of solution हम कैसे determine करेंगे? By reacting it with a solution of a known concentration. So solution of a known concentration is called as a titrant. And this is also called as a standard solution. And this solution we take in a burette. And another one where the concentration of a solution is not known to you. This is called as a sample solution. We pipette out either the 10 ml or the 20 ml of the sample solution and take it in a conical flask, add a few drops of an indicator, start gradually adding a standard solution from a burette in a controlled manner until we achieved the end point, and the end point is judged by the visual change in the color of the solution. This is called as a titration. Titration is widely used in analytical chemistry to determine the concentration of the various types of a substance. Now moving forward, this is the typical titration assembly that we use to perform this reaction or the titration. So here you see that this is the burette. The standard solution or the solution of a known concentration, we take it in a burette. The solution of unknown concentration or the concentration of the substance to be determined, we take it in a conical flask, and in a conical flask we add a few drops of a indicator. This is the clamp which hold your burette. This is your volumetric flask. The volumetric flask is used to prepare the standard solution of a known concentration. This is a funnel to transfer a solution. This is your indicator bottle to add a few drops of an indicator, and this is a wash bottle to wash the glassware before the experiment, during the experiment, or after the experiment. And the solvent we used is always a distilled water. So this is a typical titration assembly. I'm sure you must have seen in your practical lab. ये titration assembly वहाँ पर आप use करते हैं इसके अंदर. अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर the different type of a reaction. Okay, see why it is important for us to know the different type of a reaction involved in a titration. See, this is the human psychology. This is a human behavior. If we know the end result that we are going to achieve, our inclination, our perspective, our the overall involvement in the
learning is increases manifold. जब आपको ये मालूम होता है कि what you are going to achieve or what is your objective, how this session is going to be useful for you, right? How this will bring a change the way you are performing your current practical, how this will bring a change the way you are performing the calculation in the laboratory way, in the lab, in your own laboratory. सो ये सब चीज़ें, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हम लोगों को ये मालूम होता है कि हमारा 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 एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तो हमारा जो है उस सब्जेक्ट के प्रति जो इंक्लिनेशन है, हमारा जो ओवरऑल एटीट्यूड है, हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी गुना जो है बढ़ जाता है. आप छोटा सा एग्जांपल ले लें, आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप मूवी को भी डिसाइड करने के लिए उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसके एक्टर्स को देखते हैं, उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं, एंड देन यू डिसाइड द नेम ऑफ द मूवी दैट यू विश टू सी. तो एक मूवी के लिए जब आप इतना काम करते हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि मूवी देखने के बाद आपका एंटरटेनमेंट हो, जिस पर्पस के लिए आप वहां पर जा रहे हैं. तो जब आप मूवी देखने के लिए इतना कुछ रिव्यू करते हैं, तो आप सोचिए जब आप साइंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन, तो ये कुछ एक पॉपअप क्वेश्चंस हैं विच इज ऑलवेज कम एट अ बैक ऑफ आवर माइंड, दैट व्हाई शुड आई डू इट, व्हाई इट इज गोइंग टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी. सो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि किसी भी टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए केमिकल रिएक्शन का जानना बहुत जरूरी है. इसके दो या तीन जो है मुख्य जो है उसके अंदर कारण है. द फर्स्ट थिंग इज दैट, see, the calculation which are involved in a titration is largely depend upon the types of reactions involved in a titration. This is the first one. Second one, basic principle of any titration is depend upon the type of reaction. Third one, the selection of indicator is also depend upon the type of a reaction involved in a titration. So that's why it is extremely important for us to know that what are the different type of a reaction that is involved in a titration. So largely I would say that there are the four type of a reaction that we typically uh, that typically we study in titration, starting with a neutralization reaction. Neutralization reaction is a very common one, is a most simple type of a reaction used in the chemistry. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? वेयर द एसिड एंड द बेस रिएक्ट विद ईच अदर, इट न्यूट्रलाइज एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सॉल्ट एंड द वाटर. एज यू कैन सी हियर, व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it result in the production of a salt and the water. So this type of a reaction is called as a neutralization reaction. Neutralization reaction है, वहां पर उसने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. So that's why it is called as a neutralization reaction. Okay, now neutralization reaction is basically two types. One is called as the acidimetry, another one is called as the alkalimetry. Okay, now let us first talk about the acidimetry. acidimetry क्या है? acidimetry को पढ़ने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजी acidimetry. Acid means acid, metry means measurement. So measurement of the unknown concentration of an acid is called as the acidimetry. ये उस तरह के ये आपके ये वो टाइट्रेशन है जहां पर आप अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करते हैं. हाउ डू यू डू इट? इसको करने का तरीका वहां पर क्या है इसके अंदर? The basic principle is remain the same. Your objective is to determine the unknown concentration of acid. That's called as a test sample or the test solution. Pipette out a measured volume, maybe a 10 ml, into a conical flask. Add a 1 or 2 drop of an indicator, and in the burette take the standard solution, the solution of a known concentration of base, and start the titration. Start adding a standard solution of base from a burette into a conical flask till you achieved your end point. उसको तब तक ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है. ऐड इट इन अ ग्रेजुअल मैनर, इन अ कंट्रोल्ड मैनर. Over addition of standard solution brings the error in your experiment, so avoid it. So that's why it is always recommended that we should add standard solution from the burette in a drop wise manner, in a controlled manner, in a gradual manner, till you achieve the एंड पॉइंट. एंड पॉइंट वहाँ पर आपका कैसे डिटेक्ट होगा? क्योंकि आपने कोनिकल फ्लास्क में एक या दो ड्रॉप इंडिकेटर का डाला है. एट द एंड पॉइंट इट शोज द विजुअल चेंज in the color that marks the end of your reaction. Note down the reading from your burette
and apply the equation, either the n1v1 is equal to n2v2 or m1v1 is equal to m2v2. It altogether depend that at what strength, at what strength the solution is given to you, in which strength, the solution is given to you, whether the solution is given you in terms of a molarity or whether the solution is given to you in terms of a normality. कई बार आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको टीचर्स जो हैं मोलर सॉल्यूशन देते हैं, तो वहां पर आपको मोलरिटी के अंदर पूरा जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इस केस के अंदर हम अपने इक्वेशन अप्लाई करेंगे m1v1 is equal to m2v2, and suppose if the solution are given in terms of a normal, then we apply the equation n1v1 is equal to n2v2, and we use this equation to calculate the unknown concentration of acid given in a solution. So this type of the titration is called as a acidimetry, where we calculate the unknown concentration of acid in a solution by allowing the addition uh, of a standard solution of base. So this type of a titration is called as a acidimetry. And this is the first type of a reaction in neutralization. Now the second one is the alkalimetry. So like the way you emphasize the word acidimetry, similarly मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वर्ड को देखें जिसमें लिखा हुआ है alkalimetry, alkali base, right? And metry means the measurement. So a very easy way to understand the alkalimetry is the measurement of the unknown concentration of base. जहां पर कि आपको टास्क मिला है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एंड योर जॉब और योर टास्क और योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द unknown concentration of a base present in a solution by allowing it to react with a standard solution of acid. So in alkalimetry, what we do, we take the sample in a conical flask, and this time this is a basic solution, क्योंकि यहाँ पर हम alkalimetry परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पर हमारा टास्क है is to determine the unknown concentration of base present in a solution. And then in a burette, we take the standard solution of acid. To judge the end point, we add a few drops of an indicator, one or the two drop of indicator in a conical flask. और फिर देन हम एक्सपेरिमेंट अपना जैसा हमने पहले बताया था वैसे ही अपन रिपीट करेंगे. स्टार्ट ग्रेजुअली एडिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड फ्रॉम योर ब्यूरेट इनटू द conical flask till you achieve the end point, and the end point is judged by the visual change in the color of solution. So that is called as a alkalimetry. So one example here it is given, sodium carbonate with the hydrochloric acid. So in this particular example, your objective is to determine the unknown concentration of a sodium carbonate present in a solution, and the standard solution of a hydrochloric acid we used to titrate सोडियम कार्बोनेट. तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या करेंगे कि जो आपको सैंपल सॉल्यूशन मिला है, सो वी पिपेट आउट द मेजर्ड वॉल्यूम बाय द हेल्प ऑफ अ measuring pipette into a conical flask, it may be a 10 or the 20 ml, add a few drop of an indicator. ये वो ये वो सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन की है. सो एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइट्रेंट, जैसे हमने पहले स्लाइड के अंदर देखा था. देन ब्यूरेट के अंदर आप क्या लेंगे इसके अंदर, ब्यूरेट के अंदर यू टेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and gradually start adding a standard solution of hydrochloric acid from the burette in a controlled manner, drop by drop, till you get your end point. And again end point आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे ही end point आएगा तो आपके solution का जो कलर है वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा. ब्यूरेट में से आप रीडिंग नोट करें. इस प्रोसेस को आपको you have to repeat it for the 3 times because our objective is to minimize the error. तो आप एक रीडिंग लेंगे, देयर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द एरर, देयर कुड बी अ हैंड सेंसिटिविटी, देयर कुड बी another reason of getting the error. So that's why repeat the same step for 3 times. So say for example in the first reading you got 24.1, second reading is 24, third reading is 24.3, add it, divide by 3, take the average, this is your final reading. And this is also talks about the precision, right? So this is the one way of bringing the accuracy, in our experiment.
Now finally calculation कैसे perform करेंगे? As I said that it altogether depend that in which strength the solution is given to you, whether it is given in the form of a molar solution or whether it is given in the form of a normal solution. तो आपको अगर मोलर सॉल्यूशन दिया गया है तो वहाँ पर आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे m1v1 is equal to m2v2. If it is a normal solution, then apply the equation n1v1 is equal to n2v2. I hope it gives you a sufficient understanding about the first type of a reaction that we use in a titration. It's called as a neutralization reaction. This is the most simple type of a reaction. This is a easy type of a reaction used in chemistry. In a neutralization reaction, the acid is react with the base or the base is react with the acid. It neutralize, and at the end point there is a it result in the production of a salt and water. तो इसके अंदर दोनों तरीके से परफॉर्म किया जा सकते हैं. अगर आप अगर आपको अननोन कंसंट्रेशन एसिड का निकालना है तो आप एसिडिमेट्री परफॉर्म करेंगे, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको शेयर किया था. और अगर आपको unknown concentration of base निकालना है तो you have to perform the alkalimetry. Selection of the indicator is extremely important, and as I said at the beginning of my video, this is my first educational video. I am going to prepare series a series of on the the titration. This is called as a titration series, in which I am going to cover the each and every type of a titration that we performed at our school level or at our the college level, where I would like to take you in-depth understanding about कैलकुलेशन पार्ट. ओके, और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम लोग और वहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे. अभी थोड़ा सा ये फर्स्ट वीडियो है, सिर्फ बेसिक फाउंडेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको मैंने शेयर किया है. Now let's talk about the another one, which is called as a complex titration, also called as a complexometric titration. So this is also a type of a volumetric analysis or the quantitative analysis where our objective is to determine the concentration of a metal ions in a solution by allowing it to react with the standard solution of a EDTA, ethylene diamine tetraacetate. तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द concentration of a metal ions, concentration of a metal ion, say for example the calcium ion or the magnesium ion, and here we use the standard solution of EDTA to perform the titration, right? And at the end of a reaction, the EDTA is react with the metal and it form a stable water soluble complex, which marks the end point of this reaction. Since the stable water soluble complexes are formed at the end of a reaction, that's why this type of a reaction is called as the complex titration or the complexometric titration. Okay. Now अभी करना कैसे है इसको, बड़ा इजी है. Say for example the sample given to you is a water and the task is to determine the hardness of a water. As you know that the hardness of a water either due to the presence of the calcium or the magnesium ion, right? Now to perform this titration we take the sample again in a conical flask. हमेशा याद रखिए कि सैंपल आपको कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है, राइट? ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर. अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ टाइट्रेट. So in the complementary titration, remember we take the standard solution of EDTA. This is called titrant. और इसको हम लोग कहाँ लेंगे, इसको हम ब्यूरेट में फिल करेंगे, and then the rest of the process remain the same as discussed in the previous slide. Slowly add the standard solution from a burette into a conical flask till you achieve your end point. So this type of a reaction is called as a complexometric titration or the complex titration. Again, as far as the calculation point of view, M1V1 और the N2V2, it depends कि आपको जो solution दिया गया है वो किस strength में दिया गया है. तो basically the strength of a solution can be expressed in terms of a molarity or it can be expressed in terms of a normality. तो कितने रिएक्शंस का भी हमने बात कर लिया. अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बात किया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने एसिडिमेट्री को डिस्कस किया. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एल्कलीमेट्री. Acidimetry, in acidimetry we calculate the unknown concentration of acid, whereas in the alkalimetry our objective is to determine the unknown concentration of alkali or base. And the second one is a complex titration, where objective is to determine the concentration of a metal ions, the unknown concentration of a metal ions in a solution
by allowing it to react with the standard solution of EDTA. Next, move to the next type of a reaction. This is called as a precipitation reaction. The very simple example is shown on the slide. When the silver nitrate is react with the sodium chloride, it form a precipitate of a silver chloride and the sodium nitrate. So in the precipitation reaction, see what is the principle of the precipitation reaction? See, the basic principle of the precipitation reaction is that at the end of a reaction, you observe a white precipitate. That is the the basic principle of the precipitation reaction. And the example here is mentioned here, you know very common example, which involve the estimation of a silver nitrate by titrating it with the standard solution of a sodium chloride. To perform this experiment, we will take the silver nitrate solution, measured the 10 ml or the 20 ml by the help of a pipette transferred in a conical flask, and in the burette we will take the standard solution of sodium chloride, and the rest of the procedure remain the same. आपको burette से वो solution add करना है till you achieve the end point, and the end point आपको कैसे मालूम पड़ेगा? There is a formation of the precipitate in the conical flask. Determine the concentration again by using the equations such as the M1V1 or the N2V2. So this is the precipitation reactions. In my upcoming video, I will talk in detail about every type of reactions, every type of titration. Next one is a very interesting one, which is called oxidation reduction titration, or otherwise it is also called as a redox titration. Redox reaction or the redox titration, this is the type of a reaction where the oxidation and the reaction occurs simultaneously in a reaction. So such type of reaction is called as a redox reaction. In any titration where this reaction is involved, so such type of a titration is called as a redox titration, right? And we use the redox titration either to determine the unknown concentration of oxidizing agent, or else we can also determine the unknown concentration of reducing agent. So both the way we can use it. अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, वो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन आल्सो डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट. So this type of a reaction is called as a redox reactions, or the redox titration, or the oxidation reduction titration. Okay, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक सैंपल है, and you have a sample of a solution of unknown concentration of oxidizing agent, and your objective is to determine its concentration, right? Then what you have to do, you have to prepare a standard solution of reducing agent, or a standard solution of known concentration of reducing agent. Take the sample. Here the sample is your oxidizing agent, where the concentration is to be determined in a conical flask. Add 1 or 2 drops of your indicator, and then start adding your standard solution of reducing agent from the burette in a drop wise manner. And at the end point again आपको वहां पर विजुअल चेंज देखने को मिलेगा. कलर जो आपका सॉल्यूशन का कलर है वहां पर वो चेंज हो जाएगा. दैट मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल के अंदर देखा, वेयर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द unknown concentration of oxidizing agent. You can also perform this titration in another way, where your objective is to determine the unknown concentration of reducing agent. Now, to determine the unknown concentration of a reducing agent, this time your sample is reducing agent and it should be in a conical flask. So pipette out a measured volume of reducing agent and take it in a conical flask. Add a few drops of an indicator. इस टाइम आपका ब्यूरेट के अंदर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. So prepare the standard solution of a known concentration of an oxidizing agent, fill it in a burette, and add it in a drop-wise manner, in a controlled manner, till you achieve the end point. And at the end point, note down the burette reading. Repeat this step for the 3 times. Take the average of this reading, 3 readings, and calculate the concentration by applying the equation M1V1 is equal to M2V2, or the N1V1 is equal to N2V2. Okay.
नाउ अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया. वी स्टार्ट डिस्कसिंग, discussed about what is titration or the titrimetric analysis, then what is titrant, what is titrant, what do you mean by the indicator, what is the endpoint, what is the role of an indicator in any titration, how do you define the titration, extremely important. And then a standard definition of your titrant, which is the standard solution of a known concentration, and titrand is a solution of an unknown concentration or whose concentration is to be determined. Then we discussed about the different type of reactions used in a titration. चार तरह के reactions के बारे में हमने यहाँ पर discuss किया. Starting with the neutralization reaction. Again, the neutralization reaction is get divided into two parts: acidimetry and the alkalimetry. Then second one is your complex titration. Third one is your precipitation reaction or the precipitation titration, and the fourth one is the oxidation reduction titration or the oxidation reactions. Okay, now let's move to another very important one. This is very extremely important. See, titration को करना उतना कठिन नहीं है जितना कि आपको एक कैलकुलेशन को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कठिन शब्द यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, लेकिन टाइट्रेशन एक सेट प्रोसीजर के अनुसार किया जाता है. अगर आपको प्रोसीजर मालूम है तो आप उस टाइट्रेशन को परफॉर्म कर लेंगे. थोड़ा बहुत आपको समय लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए टू ब्रिंग द प्रिसीजन इन योर रीडिंग, but one of the most important thing, is to do the calculation. And for doing the calculation, knowing the few basic concepts is extremely important in analytical chemistry or in titrimetric analysis. So the first and the important one is equivalent weight. As I said, that the equivalent weight is a gateway of normality. This is the gateway of a titration. This is the critical successive factor which decide the success of your titration. अगर आपकी इक्विवेलेंट वेट की के कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा टाइट्रेशन जो है वहां पर स्पॉइल्ड हो जाएगा. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस इवन to understand the normality and how to calculate the normality or how to develop the mathematical expression of the normality. Knowing the equivalent weight again is very important, right? Second one, there is a mathematical correlation or the mathematical expression between the normality and the molarity. Even to develop the correlation between the normality and the molarity, again the concept of the equivalent weight is comes into the picture. So that's why I said that the equivalent weight a critical successive factor है which define the end result of your titration. क्योंकि टाइट्रेशन के अंदर एरर्स आने के चांसेस हमेशा रहते हैं. बहुत रीजन होते हैं एरर्स के आने के. एक रीजन उसके अंदर है कि अगर आपकी कैलकुलेशन आपने सही तरीके से नहीं करी है, अगर आपने आपके जो सब्सटेंस है उसको सही तरह से वे नहीं किया है, तो वहां पर एरर्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एंड सेकंड वन योर हैंड सेंसिटिविटी, राइट? तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विवेलेंट वेट. First, we will see that how to calculate the equivalent weight of an acid. Okay, so the equivalent. So what is the the formula to calculate the equivalent weight of an acid? This is the molecular weight divided by basicity. Molecular weight which divided by the basicity. Now, what is the basicity of the acid? The number of a replaceable hydrogen atom present in acid is called as a basicity. Or in other word, we can say that the number of a hydroxyl ion required to neutralize the acid, this is called its basicity. And it is very easy to calculate the basicity. There is a no robotic science involved in calculating the the basicity of acid. Okay, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर एसिड है तो यहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजी लिखा है यहाँ पर कि उसकी बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं. वहाँ बेसिसिटी इसलिए बोला गया है इसके अंदर कि जितने हाइड्रोजन आयन वहाँ प्रेजेंट हैं उसको आप किससे रिप्लेस करोगे? हाइड्रोक्सिल आयन से रिप्लेस करोगे. Now, what is the nature of the hydroxyl ion? The hydroxyl ion is a alkaline in nature. That's why we say that in calculating the equivalent weight of an acid, we consider the basicity. Okay, so this is the formula, simple formula of equivalent weight of acid is the molecular weight divided by the basicity, and the basicity is the number of a replaceable hydrogen atom which is present in any acid. This is called as basicity. Example लेते हैं. The example will give you a more insight.
and the clear understanding. So here our objective is to calculate the equivalent weight of a hydrochloric acid. What is our objective? Our objective is to calculate the equivalent weight of a hydrochloric acid. So we'll apply the formula molecular weight divided by its basicity. Molecular formula, or sorry, the molecular weight of hydrochloric acid is 36.5 and the basicity is 1. Why the basicity is 1? Because the number of a replaceable hydrogen atom is 1. That's why the basicity is 1. सो इक्विवेलेंट वेट एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर कितना निकल कर आया द इक्विवेलेंट वेट इज 36.5 so this is the way we calculate the equivalent weight of acid. I hope you got you know a fair understanding to calculate the equivalent weight of an acid. Okay, सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी एसिड को देखें और एसिड में ये देखें कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितना है, वो हाइड्रोजन आयन जितना है वो उसका बेसिसिटी होगा. That is, I know, the simple way of calculating it. Let's take a few, the example for the practice point of view. This is a very interesting example where our task is to calculate the equivalent weight of a sulfuric acid. इसका equivalent weight निकालना है हमें sulfuric acid का, and this is the molecular formula of your sulfuric acid H2SO4, and our formula of calculating the equivalent weight of acid is molecular weight divided by basicity. So molecular weight of H2SO4 is 98, and here the basicity of H2SO4 is 2. Why 2? Here again you see that the number of replaceable hydrogen atom or the hydrogen ion present in H2SO4 is 2. So 98 divided by 2, it comes out 49. और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पर. कई बार हमसे जो है जब हम लोग जो है न्यू कमर्स होते हैं, अभी हमने नया नया जो है 10+2 में आए हैं या फिर कॉलेज लेवल में आए हैं, तो कई बार हम ये मिस्टेक कर बैठते हैं वहाँ पर कि हम लोग जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका 98 वही इक्विवेलेंट वेट को वहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड इज हाफ as compared to its molecular weight. Let's take another example, nitric acid. HNO3 is a molecular formula, and the formula is molecular weight divided by basicity. Molecular weight of nitric acid is 63. Basicity of nitric acid is 1. Why 1? Because the number of a replaceable hydrogen atom present in nitric acid is 1. So 63 divided by 1, it comes out 63. It's quite easy, right? Let's take another example. Equivalent weight of the succinic acid. This is the structural formula of your succinic acid. If you see the structural formula of succinic acid, there are the 2 hydrogen ion, 2 replaceable hydrogen ion present in a formula of a succinic acid. तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. मॉलिक्यूलर वेट of succinic acid is 118, and here the basicity is 2. Why 2? Because the replaceable hydrogen ion here is 2. So 118 divided by 2 comes out 59. So this is the equivalent weight of your succinic acid. Let's move to the another example. Calculate the equivalent weight of a acetic acid. बहुत सरल example है. अगर आप acetic acid को देखें, this is the structural formula of your acetic acid, and it contains the 1 hydrogen ion. So we apply the formula molecular weight divided by its basicity. So molecular weight of your acetic acid is close to 60 and basicity is 1. Why the basicity is 1? Again, अगर आप यहाँ पर hydrogen ion देखें तो यहाँ पर आपको एक ही हाइड्रोजन आयन देखने को मिलता है. सो दैट्स व्हाई हिज बेसिसिटी इज 1, और अदरवाइज वी कैन से द नंबर ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड is 1. This is another definition of your basicity. Okay, so far so good. I hope you enjoy this video, you enjoy this learning. There are the certain practice questions. Do the practice, calculate the equivalent weight of boric acid, phosphoric acid, succinic acid, anhydrous oxalic acid, dehydrated oxalic acid. Only the few examples I jotted down on the slide. You can also do the practice from your NCERT books. There are the good amount of questions mentioned in between the chapter as well as at the end of a chapter. So please do the regular practice. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और
आपको कैलकुलेशन में आपको जो है आसानी होगी, एंड एट द सेम टाइम योर कॉन्फिडेंस लेवल इज आल्सो build up at the laboratory level. Okay, so practice is extremely important. Now we are coming to the second one, how to calculate the equivalent weight of base. Formula इसका बड़ा easy है. The equivalent weight of a base is a molecular weight divided by acidity, divided by the acidity, right? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के अंदर हमने देखा था द मॉलिक्यूलर, इस फॉर्मूला इज molecular weight divided by basicity, whereas in the case of base we say that equivalent weight of a base is molecular weight divided by basicity. Now what is the basicity of a base? The number of a replaceable hydroxyl group present in any base is called as acidity. यानी उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कितने प्रेजेंट है, वो आपकी वहां पर एसिडिटी बताता है. और अदरवाइज वी कैन से दैट द नंबर ऑफ अ हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द बेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसिडिटी. सो इन either way you can, you can learn the thing in either way. You can develop a conceptual understanding around this subject. Okay, तो अभी हाल फिलहाल आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे. सो हियर द एग्जांपल, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल, एग्जांपल से और ज़्यादा समझ में आएगा. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हियर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. द फार्मूला इज molecular weight divided by acidity. So the molecular weight of sodium hydroxide is 40 and acidity is 1. Why 1? Because the number of a replaceable hydroxyl group is 1. That's why its acidity is 1. So in this way we calculate the equivalent weight of a base. Okay, let's take few other example, few the other interesting example. Let's see here the equivalent weight of potassium hydroxide. The formula remain the same, molecular weight divided by acidity. Its molecular weight is close to 56, whereas the acidity is 1. क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें the replaceable hydroxyl group is 1, so 56.11 divided by 1, so it comes out 56.11. So the equivalent weight of a potassium hydroxide is 56.11. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट. अब यहाँ पे इस एग्जांपल पे आते हुए थोड़ा सा आपके पेन रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, और किसी भी बेस की एसिडिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ अ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन. ये हमने पढ़ा था उसके अंदर. अब सोडियम कार्बोनेट तो एक बेस है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही नहीं, तो फिर आप इस केस के अंदर एसिडिटी कैसे निकालेंगे? Hope you are getting my question, right? So I don't want to any one of you to carry any confusion with you, right? At the end of this presentation I want to see a big smile on your face. Okay, तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम. यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट एक एल्कली है, राइट? इसके अंदर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है नहीं, और इस फॉर्मूले में आता है कि आपका कितना जो है उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है, वो जो हम उसको एसिडिटी बोलते हैं. सो इन दिस केस वेयर यू डोंट हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वी कंसीडर द पॉजिटिव वैलेंसी, द नंबर ऑफ अ पॉजिटिव वैलेंसी. So in the case of the sodium carbonate, there is a 2 positive valency. So here are the two, here it involves the 2 sodium ion. So molecular weight divided by the number of a positive valency. So molecular weight of sodium carbonate is close to 106 divided by 2, because the number of a positive valency is 2 here, and it comes out 53. तो थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करना. वैसे भी सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. सोडियम कार्बोनेट एक एल्कली है, इसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर है, एल्कलिन इन नेचर है, एंड द एल्कलिन नेचर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन. दिस इज द अनदर वे टू कैलकुलेट योर एसिडिटी. सो इसका जो आपका एल्कलिन नेचर है वो सोडियम आयन के कारण है. तो इसमें कितने सोडियम आयन आ रहे हैं? यहाँ पे 2 सोडियम आयन आ रहे हैं. सो द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव वैलेंसी को कैलकुलेट कर लें, या फिर आप देख लें कि इसके अंदर कितने सोडियम आयन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे उसको डिवाइड कर दें. सो यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. अनदर वेरी वेरी गुड एग्जांपल इज द सोडियम बाइकार्बोनेट.
बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एज वी नो दैट अगेन, the nature, the chemical nature of a sodium bicarbonate, it's a basic in nature, alkaline in nature, and once you ionize it, you will get a one sodium ion. So here the equivalent weight of sodium bicarbonate, molecular weight divided by the number of positive valency. तो इसके अंदर एक कितनी positive valency है, 1 है यहाँ पे, right? So the molecular weight is 84 divided by 1. ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा दूसरा तरीका ये है, सोडियम बाइकार्बोनेट में जो इसका बेसिक नेचर है, इट इज ड्यू टू द सोडियम आयन। नाउ हाउ मेनी सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन अ formula of sodium bicarbonate? It's only one, is only one. So therefore its acidity is 1. So molecular weight divided by 1, it comes out 84. लास्ट वन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि हमने इन दो एग्जांपल में देखा, द सेम प्रिंसिपल विल आल्सो अप्लाई हेयर। हेयर द how much positive valency involved here is a 2, so molecular weight divided by the number of positive valency is molecular weight of calcium carbonate is close to 100 divided by 2, it comes out 50. So this is how we can calculate the equivalent weight of acid or the equivalent weight of a base. This is how we can differentiate between the formula to calculate the equivalent weight of a acid and base. Okay. All right. These are the certain practice questions. Practice कीजिए. Potassium bicarbonate, calculate the equivalent weight of potassium bicarbonate, sodium bicarbonate, potassium carbonate. Answer is also given there. Basic principle apply कीजिए, basic formula apply कीजिए, and calculate the equivalent weight of these the substance. And always insist for the practice point of view, always refer your NCERT books. Always refer your NCERT books. So take out your NCERT books and practice those questions. Many questions are given in between the chapter, and a lot of practice questions are given at the end of a chapters. So stick with the basic, stick with your NCERT books. Okay, आगे चलते हैं इसके अंदर. Now we are coming to the very important one, that is how to calculate the equivalent weight of a oxidizing or the reducing agent. Okay, see, it's very interesting to know the formula as well as the basic understanding to calculate the equivalent weight of oxidizing and the reducing agent. First we should be able to differentiate between the oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. इन चार चीजों के बारे में हमको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए. Then it's a little easy task for all of you to calculate the equivalent weight of a reducing agent or the oxidizing agent. See, first let's start with the oxidation. So oxidation के definition आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा. Oxidation can be defined in a many ways, such as the addition of oxygen or the removal of the hydrogen or the increase in the oxidation number, or there is a loss of electrons, So example are given here. Fe2 positive is get converted into the Fe3 positive. तो यहाँ पर आयरन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. So there is a loss of 1 electron. Okay, so ये ऑक्सीडेशन के अंदर हमें किस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर? In oxidation there is loss of electron. You have to remember this thing. और इसको याद करने का दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया. इट मींस दैट द आयरन डोनेट अ 1 इलेक्ट्रॉन. डोनेट मींस इट लूजेस द 1 इलेक्ट्रॉन. डोनेट करना मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया. So there is a loss of electron, right? Now on the basis of the definition of the oxidation, we'll try to define the reducing agent. Reducing agent को हम define करेंगे कि reducing agent क्या होते हैं. See, the reducing agent, these are the the substance which in a chemical reaction it reduce the other but itself get oxidized. बड़ी interesting definition है. Reducing agent किसी भी chemical reaction के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर it reduce its counterpart. Counterpart means the other reactant. It reduce its counterpart or the other reactant but itself get oxidized. इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं. और क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, that's why there is gain of electron.
तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे यहाँ पर लिखते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. This is the formula to calculate the equivalent weight of your reducing agent. Let's take few example here. The first one, sodium thiosulfate. Here you see that in a chemical reaction, sodium thiosulfate loses 2 electron, right? So the equivalent weight of your sodium thiosulfate is molecular weight divided by 2. It comes out to 48.17. यहाँ पर हमने molecular weight के अंदर 2 से multiply किया है. Please try to understand it. Right? Why we multiply by the 2? Because in the chemical reaction, the 2 molecules of the sodium thiosulfate is involved. That's why the molecular weight is multiplied by 2. And how much the number of electrons involved in a chemical reaction? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है लॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 2 करना है. अनदर एग्जांपल वेयर द फेरस इज कन्वर्टेड इनटू द फेरिक आयन, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सो इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, एंड हियर इट इज कम्स आउट 278. So this is the way of calculating the equivalent weight of a reducing agent. Now I am coming to the another very important one, that how to calculate the equivalent weight of oxidizing agent. See, the formula of calculating the equivalent weight of oxidizing agent is quite similar to the reducing agent. Only one change. Here the molecular weight divided by the number of electrons gained. Now why the number of electrons gained? Because oxidizing agents are the one which oxidize the other but itself get reduced. बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन इनका खुद का रिडक्शन हो जाता है. और क्योंकि खुद का रिडक्शन हो जाता है, तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है इसके अंदर, इन एनी रिडक्शन in any chemical reaction where it involves the reduction, there is gain of electrons. तो इसलिए इस फॉर्मूले के अंदर नीचे हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन. क्विकली कुछ यहाँ पर हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं. वेरी कॉमन एग्जांपल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल यूज्ड at the laboratory level, especially when you perform the oxidation reduction titration, because oxidizing agent see, this KMnO4 is act as an oxidizing agent on all the three media, acidic medium, alkaline medium, and the neutral medium, where the number of electrons gained are different. That's why its equivalent weight is also different. जैसे आप acidic medium में देखिए, the number of electrons gained is 5 electrons, so therefore the molecular weight is divided by 5. So here the molecular weight is 31. लेकिन जब आप इसको एल्कलाइन मीडियम में इस रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट इज ओनली 3 and the molecular weight divided by 3, then this time it comes out 52. You see that there is a lot of a difference between the equivalent weight of KMnO4 in acidic medium as compared to the alkaline medium. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. न्यूट्रल मीडियम के अंदर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3. व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज 3. अगेन इट कम्स आउट टू द 52.67. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. प्रैक्टिस कीजिएगा आप. प्रैक्टिस के लिए वंस अगेन मैं बोलूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबों पे स्टिक करें. कुछ एक आप सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं, कुछ गाइड बुक्स आती हैं. Depending upon the recommendation of your teacher, you can buy those books, but sticking with the basic is extremely important. Okay. Yes. Now finally we are coming to the normality. अभी हम normality के ऊपर आ गए हैं. इसके अंदर normality is the strength of a solution. It can be expressed either in terms of a normality or either in terms of a molarity. Let us first define that what is a normality. If a gram equivalent weight of a solute dissolved in a 1 liter of a solvent, it represents the one normal solution. यानी अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसी सॉल्यूट का 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, सो यू विल गेट अ वन नॉर्मल सॉल्यूशन. ओके. एंड मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन normality is equal to W by E into 1000 upon V, where the W is the weight of solute, E is the equivalent weight, 1000 it is there in the formula, and the volume in the ml, right?
यहाँ पर ये 1000 क्यों आया, ये भी आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका लीटर ऑफ सॉल्वेंट था और वॉल्यूम नीचे आ रहा था यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड किया, तो दैट्स व्हाई दिस 1000 कम्स एट द अपर पार्ट ऑफ रिएक्शन, सॉरी द इक्वेशन। सो दैट इज हाउ वी गॉट अ फैक्टर ऑफ द 1000। यहाँ पर आपको थोड़ा सा, जैसे मैं शुरू में बोला था कि लर्निंग जो है दोनों तरह से चलती है, कॉन्सेप्चुअल भी होनी चाहिए, मगिंग अप भी होनी चाहिए। सो फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम, स्पेशली फॉर द बिगनर इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, बिगनर at the school level, I insist you to mug up the mathematical expression of normality. Please mug up it. N is equal to W by E into 1000 by V। इस फॉर्मूले को आप जैसे हिंदी में बोलते हैं रट लीजिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया गया, उसके पहले आपको डेफिनेशन उसके लिए बता दिया। इज अ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट द वन नॉर्मल सॉल्यूशन। डेफिनेशन आपने याद कर लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से मगअप कर लें, प्रैक्टिस करें। अब हम एक दो जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। तो here is a practice question. A solution of a caustic soda contain the 5 gram of a NaOH per liter. What is the normality of the solution? तो एक सॉल्यूशन है जहां पर आपको 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो विल अप्लाई द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W by E into 1000 by V, where the W is the weight of the solute. So we put a 5 here because the 5 gram NaOH यहाँ पर मेंशन किया गया है, डिवाइडेड बाय इस इक्विवेलेंट वेट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40, हमने पहले भी इसको कैलकुलेट किया था, राइट। देन 1000 बाय V, 1000 आपके इक्वेशन के अंदर है, एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन ml। हियर द वॉल्यूम इज मेंशन इन अ लीटर, तो इसको हम लोग ml में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सो हियर इज 1000 ml। Do the calculation, the normality is comes out 0.125. So this is the simple way to calculate the normality। सी मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल जो है कैप्चर किए हैं, बट टाइम वीडियो का बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एग्जाम्पल को आप करिए, राइट। कैलकुलेशन यहाँ पर पूरा मेंशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, now we can also use the normality equation to calculate the weight of a substance required to prepare the standard solution, right। जैसे मान लो कि लेबोरेटरी में आपको बोला गया प्रिपेयर द 250 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया 250 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाए। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना वेट हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे। इसके लिए हम लोग किसकी मदद लेंगे, टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट हाउ मच द weight of the sodium hydroxide required to prepare the 250 ml of 0.1 normal solution. This we calculate by the help of a normality equation. We say normality is equal to W by E into 1000 upon V। weight of solute आपको calculate करना है। normality here it is given 0.1, equivalent weight is 40 into 1000 divided by 250 because आपको 250 ml solution बनाना है। do this calculation, finally it comes out 1 gram NaOH। so what you have to do, that finally weigh the 1 gram of sodium hydroxide in a weighing balance, slowly dissolve it in a volumetric flask in distilled water and make up the volume up to the 250 ml। this is how you get the standard solution of sodium hydroxide। okay, now we are coming to the another one which is called as the molarity। इसी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के अंदर डिफरेंस जो है बहुत छोटा सा है। नॉर्मेलिटी के अंदर हमने देखा था इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो नॉर्मेलिटी के अंदर हमने देखा था इफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इट रिप्रेजेंट द वन नॉर्मल सॉल्यूशन। मोलरिटी के अंदर इक्विवेलेंट वेट नहीं आता। Here it says that if gram molecular weight of a solute dissolved in a 1 liter of a solvent, it represents the 1 molar solution। And what is the mathematical expression? Molarity is equal to W by M into 1000 upon V। W by M into 1000 upon V। आप देखिए मोलरिटी के अंदर यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट नहीं आ रहा। So like the way you learn the mathematical equation
of normality. Similarly, I request you to please mug up the mathematical expression of molarity. Molarity is equal to W by M into 1000 upon V, where the W is the weight of the substance, molecular weight is the molecular weight of your solute into 1000, and the volume in the ml. First example, what is the molarity of the solution containing 2 gram of sodium carbonate per 100 ml? तो यहाँ पर आपको मोलरिटी निकालनी है उस सॉल्यूशन की जिसके अंदर 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है पर 100 ml ऑफ वाटर. सो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे W by M into 1000 upon V. The weight of the substance here it is given 2. तो यहाँ पर we put 2 here. Divided by the molecular weight. The molecular weight of the sodium carbonate is 106. So we put 106 into 1000. 1000 का फैक्टर आपके इक्वेशन के अंदर है and divided by the volume in a ml. So here the volume given is 100 ml. So divided by 100. Do this calculation. The molarity comes out 0.188. ओके तो आपको दो इक्वेशन याद रखनी है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W बाई E इंटू 1000 अपॉन V, वेयर एज द मोलरिटी इज इक्वल टू W बाय M इंटू 1000 अपॉन V, राइट. और ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके अंदर. एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर. अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था वहां पर आपको 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना था. अब देखिए यहाँ पर आपके टीचर ने आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया. जैसा कि मैं अपने पिछले स्लाइड के प्रेजेंटेशन में बोलता आ रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि जो आपकी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो किस उसमें मेंशन है, वेदर इट इज एक्सप्रेस इन द मोलरिटी और द नॉर्मेलिटी. So here what is our task? Our task is to prepare the 250 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution. ये हमें बनाना है. तो इसको बनाने के लिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी मेजर करनी पड़ेगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कितना, इसकी कितनी क्वांटिटी जो है हम लोग वे करें. So for this we apply the formula of the molarity. Molarity is equal to W by M into 1000 upon V, where the W is the weight of the solute. So the weight of the solute we have to calculate. Molarity it is mentioned here. हमको बनाना है 0.1 molar solution. We put 0.1 here. Divided by the molecular weight. The molecular weight of sodium hydroxide is 40 into 1000 divided by 250. Because हमें कितना वॉल्यूम बनाना है 250 ml का. कैलकुलेशन करें. Finally the weight comes out 1 gram sodium hydroxide per 250 ml. तो जब आप इस तरह के सॉल्यूशन को बनाएंगे तो ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा कि आपको कितना ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए. आप 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड केयरफुली वहाँ पर वेइंग करें अपने वेइंग बैलेंस के अंदर and slowly dissolve in a distilled water and finally make up it up to 250 ml in a volumetric flask. So this is the way of preparing the standard solution. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके अंदर कुछ एक और यहाँ पर क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन को आप कीजिएगा. ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आई इंक्लूड in the presentation. So do this calculation. Even the calculation is also mentioned there. This is very very important. As I said, this is the last part of my presentation. How to develop the correlation between the molarity and the between the normality and the molarity. So to develop the correlation between the normality and the molarity, हम लोग क्या करेंगे, हम normality की equation से लिखना शुरू करेंगे. किसकी? Normality की equation. तो normality का mathematical expression क्या होता है? W by E into 1000 upon V. ओके. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर equivalent weight जो है इसको भी जो हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. ओके. और अदरवाइज डिवाइडेड बाय द एसिडिटी और बेसिसिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, राइट. तो इसको यहाँ पर फॉर्मूले को पूरा थोड़ा सा ओपन करके हम लोग लिखते हैं इनटू 1000 अपॉन वी. ओके. नाउ इन दिस फॉर्मूला यू सी दैट व्हाट इज दिस. ये देखिए आप, ये क्या आपको मिल गया. ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? Sorry, because of the some reason not able to going back into my previous slide. I'm trying it. Uh, Anyway, I will cover this in my next presentation.
I hope you enjoy the today's learning. Let me quickly summarize the topic that we have covered today. We started our discussion with the titration or the titrametric analysis. How do you define the titration? Then differentiation between the titrant and the titrant. Um, the meaning of an indicator. Then how to find out the endpoint of any titration. Then different type of a reaction starting with a neutralization again divided into acidimetry, alkalimetry. Then the second one is your complexometric titration, third one is a precipitation titration, and fourth one is your oxidation reduction titration. और उसके अलावा हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट को काफ़ी 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 जो है इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश की है, like equivalent weight of acid, base, oxidizing agent, reducing agent, and we also discuss about the normality and the molarity. और मैं फिर आपसे इंसिस्ट करूँगा कि especially for the beginner in the field of a pharmacy, in the beginning, at the beginning of your session in the 10 plus 1 or the 10 plus 2, please mug up the mathematical expression of both the normality and the molarity. It will help you a lot. Like normality is equal to W by E into 1000 upon V, whereas the molarity is equal to W by M into 1000 by V. हम लोग कोशिश कर रहे थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए, मैथमेटिकल कोरिलेशन डेवलप करने के लिए, लाइक बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड द मोलैरिटी. तो उसका फाइनल मैं आपको आंसर बता देता हूँ. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी or basicity or number of electrons gained or the number of electrons lost. This is the mathematical, the correlation between the normality and the molarity. I hope you enjoyed my today's video. Please keep on watching my YouTube channel. I need your lot of support. Please don't hesitate to give your feedback. If there is any specific topic that you want me cover in my upcoming educational video, please do write me. Because of the some reason I'm not able to move my slide. If you please take a note of my mobile number if you can. My mobile number is 9829026277, and my email ID is manishvarma1973 at the rate gmail.com. But I promise you in the next presentation I'll share you my entire contact details. So for the time being, wish you all a great time ahead. Enjoy the learning and also come out with the flying colors. So goodbye and have a nice time ahead. Thank you.